Hi, my name's Kate Bland. I'm the director of Kaedem Dairies. I've operated my dairy farm for about 20 years. इन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो इनकी अवेलेबल इस वक्त स्टॉक है फॉर सेल, जो अराउंड अबाउट 250 हैफर्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर सेल, उनमें से हम इंशाल्लाह कोई अराउंड अबाउट 150 हैफर्स इधर से सिलेक्ट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स. मैं मुदस्सिर मलिक. हमारी रिवरजन की कैटल शिपमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट जारी है. उसी सिलसिले में हम एक और डेयरी फार्म है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट साइड ऑफ विक्टोरिया, कैडिम डेयरी फार्म. इधर हम आए हैं. यहाँ की ये एक फैमिली ओन्ड फार्म है जो कि तकरीबन 50 साल से जो है वो डेयरी फार्म के बिज़नेस में हैं. लीज़ जो हैं वो इन्होंने अभी तकरीबन 20-22 साल से इस बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे हमने कुछ कैटल की रिक्वेस्ट की थी. हम आज फर्स्ट असेसमेंट करने आए कि इनका हर्ड है कैसा, कुछ इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किस किस्म की कैटल जो है वो ब्रेड करती हैं और हमारे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इंशाल्लाह इनका हर्ड हम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है. ये अराउंड अबाउट 300 kg के रफली अराउंड अबाउट कैटल है इस वक्त इसका वेट. हम इसमें से देखेंगे कि हमारे लिए क्या अवेलेबल है, उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे. शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हम यहाँ से कैटल जो है इंशाल्लाह जैसे ही हमारी डील क्लोज़ होगी हम इसको अपनी एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी पे ले जाएंगे फॉर द AI प्रोग्राम. सो थैंक यू वेरी मच प्लीज़ फॉर गिविंग अस अ टाइम टुडे एंड वी रियली अप्रिशिएट, वी रियली हैप्पी टू सी the herd here. We of course definitely will go on to the other side as well to look on the other heifers as well and the milking cows, and we'll see how they look like, because this is all for our Pakistani farmers. So Liz, a little bit about your farm and just tell us, like, is this all AI bred heifers? Yes, yep. We've been AIing for about 40 years now. Dad selects the bulls on type and what suits the dam. So more. Every animal's specifically mated to a specific sire, so we use about 10 different sires a year, depending on the quality of the dam. सो फार्मर्स ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल AI जो है वो प्रोग्राम्स रन करती हैं अपनी डेयरी फार्म के ऊपर. इनके जो डैड हैं जो पिछले 50 साल से फार्मिंग कर रहे हैं वो यूजुअली बुल सिलेक्शन करते हैं. रफली 10 बुल जो हैं ये हर साल सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द एनिमल और डैम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये अपना AI प्रोग्राम रन करते हैं. सो फार्मर्स हम लिस्ट से थोड़ा सा इनके एनिमल्स के जो जीनोमिक मेरिट है उसके ऊपर बात करेंगे और कैटल को ये डाटा कैसे मेंटेन करते हैं. इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट अ बिट अबाउट the herd's genomic merit and how you keep the data up to date in your system and how you evaluate the genetic strength of your herd. Yep, so all the heifers and the cows are genomically tested. They're a registered herd. In my dairy we have fat protein, so every cow's monitored every day for the total kilos they do. So we also breed upon that and try and improve it all the time. We only keep the best cows, the rest are culled and kept, so the herd's always beautiful. So farmers ये कह रही हैं कि ये अपने सारे हर्ड का जीनोमिक जो डाटा है और जो रजिस्ट्रेशन है वो अप टू डेट रखनी है ऑफ कोर्स, और अपना इनका जीनोमिक मेरिट में जो कैटल जो इनका टारगेट होता है जो उसकी मेरिट के ऊपर नहीं आती जो कैटल उसको डेफिनेटली कॉल कर देते हैं. सो कीप द हर्ड स्ट्रेंथ रियली अप हाई. सो इसीलिए हमने इनका फार्म भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि हमने इधर से भी कुछ कैटल जो है वो इंशाल्लाह प्रोक्योर करनी है अपने कैटल शिपमेंट के लिए. सो कैन जस्ट टेल अस अबाउट व्हाट्स रियली द हर्ड इज basically on the grazing here mainly. Yeah. So what sort of milk average are you getting the volume wise? Of course you just mentioned before that the protein you're getting how many kilos. Actually just tell us about the milk solids you are getting and the volume basically from the herd. So my herd averages over the 12 months 11,000 litres a head and 760 kilos of solids.
we have about 30% replacement, so there's a lot of young stock in there, so the numbers are quite elevated. सो फार्मर्स हम इस वक्त लेस जो ऑनर हैं फार्म के ब्लैंड्स के जिन्होंने 50 साल पहले जो है ये अपना काम शुरू किया था. सो थैंक यू वेरी मच लेस फॉर गिविंग अस टाइम टुडे. जस्ट टेल अस a bit about the background of blend and how you have created such a good herd, and from how many years have you been in the dairy sector and dairy industry, and how you see your herd bit different than the other Victorian herds. Yeah, well, I used to manage a hardware store, and I finished for Murray Goulburn, a milk company, and I started milking cows when I was 50 years ago. Started with a herd of 60 cows and 100 acres, and slowly my wife and myself bought land, and we soon realised that the way to make money out of dairying was to not have a herd of cows. You had to have a herd of cows up at the top, because they are the ones that are returning the money. I was fairly good ticking the calculator. So we've always bought the best cows out of the market, and always used the best semen from anywhere in the world. Not locked into any semen company. Whoever's got the bull I want to use, we buy. And that's not counting what feeds the calves. There's calf milk on top of that. That's actually counts what the factory is taking away, and so which puts us in the top, around about the top 5% in Australia for production. Production's done all off grass and grain, no mixer wagons. So we feed around about 10 kilograms of grain. We have a 330-day lactation, so we only give them about 30 days dry, because the cows, when they finish their lactation, they're usually in a condition score 5.5, so we don't need to put any condition on them to calve again. And when the cows are dry, we keep feeding them grain anyway to maintain that body weight and the health of the cow. सो फार्मर्स का अपना एक्सपीरियंस सुना कि इनका फार्मिंग का जो इन्होंने इतने साल पहले स्टार्ट किया है, अराउंड अबाउट 50 ईयर्स अगो इन्होंने जब ये इस्टेब्लिश किया तो 60 कैटल से इन्होंने स्टार्ट किया और 100 एकर्स थे इनके पास. इस वक्त इनके पास माशाल्लाह से नंबर ऑफ 100 कैटल हैं. सो इनके पास रफली जो है वो 6000 का हर्ड है. This herd's 1400. Yeah, on this side is 1400, but total इनके पास 6000 का हर्ड है. तो ऐसे इन्होंने प्रोग्रेस की है पिछले 50 साल से. इनका मानना ये है कि जो टॉप ऑफ द रेंज कैटल है वही आपको रिटर्न बैक करती है. सो इसलिए इन्होंने हमेशा ऑलवेज़ अपने हर्ड को मेंटेन करने के लिए टॉप ऑफ द लाइन सीमन यूज़ किया है. डजंट मैटर कि वो किस कंपनी का बुल है. ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी लॉक नहीं किया कि हमने स्पेसिफिकली इस कंपनी से ही बुल या सीमन अपना जो है वो प्रकोर करना है अपनी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए. सो वेर एवर दे गेटिंग द गुड बुल्स दे जस्ट प्रकोर द सीमन और वो उससे अपना इंसेमिनेशन जो है वो प्रोग्राम रन करते हैं. इनका मानना ये है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त 330 किलोज ऑफ जो है मिल्क सॉलिड ले रहे थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने अपना हर्ड इतना इंप्रूव कर लिया कि इनके पास तकरीबन 750 किलोज ऑफ मिल्क सॉलिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. अराउंड अबाउट 11,000 लीटर जो है वो ये मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं पर लैक्टेशन एक काऊ से एवरेजली, और वो भी ग्रेजिंग के ऊपर है. ये यूज़ करते हैं सम ग्रेन्स एट दी एंड जब ये ड्राई करते हैं काउस की. और इनके हर्ड की एक ये ब्यूटी भी है कि ये जस्ट गिव देम 30 डेज़ ऑफ ड्राई पीरियड. ये हमारी तरह 60 दिन नहीं देते, क्योंकि इनका मानना है कि ये काऊ का ऑलरेडी जो है वो बॉडी स्कोर जो है मेंटेन होता है. उन 30 दिनों में वो जस्ट उनको टाइम पीरियड चाहिए होता है कि वो नेक्स्ट काविंग के लिए रेडी हो जाएं. और ये मेनली जो है वो उस वक्त जब 30 पीरियड ड्राई होता है तो उस वक्त उनको कंसनट्रेशन जो है वो ऐड करते हैं ताकि वो अपनी कंडीशन को मेंटेन कर लें फॉर द नेक्स्ट लैक्टेशन. सो फार्मर्स इन्होंने 11 मंथ्स में इनका 400 kg जो है वो वेट गेन कराया है. सो इट्स ब्यूटीफुल वेट गेन एज वेल, क्योंकि इसका मतलब है कि ये अभी जस्ट रेडी टू इंसेमिनेट हैं. और हमें शायद इनमें से भी कुछ हैफल्स जो है इंशाल्लाह वो हम सेलेक्ट करेंगे जो हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लेके जाएंगे एडजस्टमेंट के ऊपर, जिधर हम इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे. We're just down here with the Bland family, selecting out cattle with Rivergen and Nasna, who we've been working with over the past few years, supplying them with the top end animals to go over into the Pakistan community. Hopefully these are the cattle that are going to perform
and sort of give them the same sort of production that we get over here. तो हम वी आर रियली थैंकफुल टू ब्लैंड्स फैमिली दैट इन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो इनकी अवेलेबल इस वक्त स्टॉक है फॉर सेल, जो अराउंड अबाउट 250 हैफर्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर सेल, उनमें से हम इंशाल्लाह कोई अराउंड अबाउट 150 हैफर्स इधर से सिलेक्ट करेंगे जो रियली टॉप ऑफ द लाइन होंगी। बाकी की हैफर्स हमारा ऑलरेडी इनसे कमिट हो चुका है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो आप हमें लिस्ट देंगे, जो ऑप्शन देंगे, उसमें से हम अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर आउट करेंगे एनिमल्स। सिलेक्टर्स भी हमारे साथ आए हुए हैं, नेस्ना की टीम हमारे साथ है। वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु आर सपोर्टिंग अस टू मेक दिस प्रोजेक्ट गो रियली वेल। और हमारा यही फोकस है कि जहाँ जहाँ से हम अपना एनिमल प्रोक्योर करें वो रियली हाई एंड हो। सो इफ़ यू कैन जस्ट टेल ओवर पाकिस्तानी फार्मर्स अ बिट अबाउट दैट हाउ वी आर डूइंग आवर सिलेक्शन फ्रॉम ब्लैंड्स। So all the cattle will be run through the yards and individually looked at their eyes, their mouth, their udders, their strength. Only the best will be drafted off, and the remainder we'll have to provide to the second and third option buyers. So Rivergen will only be buying the best. Thank you very much farmers, stay tuned. We will be अपकमिंग विद अवर नेक्स्ट वीडियोज़। आपको जैसे जैसे हमारी कैटल शिपमेंट जो है वो आगे चलती जाएगी, हम अपनी वीडियोज़ के अपडेट्स आपके साथ शेयर करते जाएंगे और ऐसे ही फार्मर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करवाते रहेंगे। सो वी आर लर्निंग अ लॉट। ऑफ कोर्स हमारा ये मोटो है कि आप लोग भी जितना इससे लर्न कर सकते हैं एंड ग्रो टुगेदर विद अस। थैंक यू वेरी मच फार्मर्स, स्टे ट्यून्ड।